Bismillahirrahmanirrahim. Chapter number 4, Matrices and Determinants. The introduction है जी. The word matrix was first introduced by English mathematician James Sylvester 1814 से लेके 1814 से लेके 1897 तक इसका पीरियड है जी. To reduce the amount of writing in solving the system of linear equations. Another mathematician, Arthur Cayley, 1821 to 1895, also developed the theory of matrices independently for solving linear equations. Nowadays, matrices plural of matrix, but matrix की जो प्लूरल है ना वो मैट्रिसेस है या इस मैट्रिक्स की जो जमा है वो मैट्रिसेस है आर यूज इन हाई स्पीड कंप्यूटर एंड अदर ब्रांचेस ऑफ नेचुरल एंड सोशल साइंसेस टू solve their problems. While dealing with data, numerical values, one may want to convert the data in an organized way such that it becomes meaningful and understandable. Summarizing the data in tabular form can easily be done with the help of the matrices. Thus, a matrix is a useful device to summarize and display the data in tabular form. Once again, while dealing with the data, numerical values, one may want to convert the data in organized way such that it becomes meaningful and understandable. Summarizing the data in tabular form can easily be done with the help of the matrix. Thus, a matrix is a useful device to summarize and display the data in tabular form. Consider the test score for 5 students in N3 examination. These score can also be displayed in the following data. Consider the test score for 5 students and in 3 exams. These score can be displayed in the following table. Students हमारे पास है 1, 2, 3, 4, 5. भाई ये उसके पहले टेस्ट में मार्क्स हैं 73, 91, 65, 59 एंड 75. सेकेंड टेस्ट में जो है ना वो 82, 95, 70, 80 और 76 हैं. थर्ड टेस्ट में 86, 98, 88, 99 और 74 हैं. We can represent this information without heading in rectangular array of numbers as follows. भाई आप इनको क्या लिखेंगे? इनको आप ये जो है ना टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे. इनको आपने ये 73, 91 ये पहले रो में पहले कॉलम में, 82, 95, 70 ये दूसरे कॉलम में, 86, 98, 88 ये थर्ड कॉलम में. This rectangular array of number in rows and columns are called matrix. भजन ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है, ये रो 4 है और ये रो 5. ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3. भाई ये कॉलम 1, ये कॉलम 2, ये कॉलम 3. भजन ये जो हॉरिजॉन्टल चीजें थी ये रोज कहलाती हैं. फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 4 रो, 5th रो और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 थी. This matrix contains the test scores enclosed by the pair of large brackets. The array in
is rectangular in shape, having 5 rows and 3 columns. Each row contains 3 test score for the particular student, and each column contains 5 scores on a particular test. The numbers in the matrix are called elements or entries. The above matrix consists of 15 elements, hence matrix can also be defined as by an arrangement of numbers into m rows and n column is called matrix of order m cross n. By an arrangement of numbers into m rows and n column is called a matrix of order m cross n. Matrices are always denoted by capital letter A, B, C, etc., while their elements by small letters small a, small b, small c, etc. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास A है, ये A11, A12, A1C, A1 है, A21, 22, 23 up to 2n, up to so on AM1, M2, MC, MC up to MN. भाई ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम वगैरह वगैरह. A11 का मतलब पहली रो पहला कॉलम, 12 का मतलब पहली रो दूसरा कॉलम, 13 का मतलब पहली रो तीसरा कॉलम, 1n का मतलब पहली रो n कॉलम. भाई पहला रोज को शो करता हूँ, दूसरा कॉलम को जी कहते. दिस फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स इन टेबुलर फॉर्म. द टू स्टूडेंट्स with each element shows the position of the elements in the matrix. For example, A11 shows it is an element of the first row and first column. A12 shows that it is an element of first row and second column, and so on. AMN shows it is an element of mth rows and nth column. It must be noted that first position is fixed for row and second position is fixed for column. A matrix can also be written in short form or abbreviated form as, इसको A को AIJ लिख दें, I होगा 1 2 3 4 5 up to M, और या इसको AIJ MN, और J होगा 1 2 3 4 5 up to N. The elements AIJ is an element in IJ position of A, where the subscript I stands for position of row and subscript J stand for the position of matrix, position of columns in the matrix. The order of the matrix. Number of rows and number of columns in the matrix is called the order of the matrix, denoted by m cross n, read as m by n, where m shows number of rows and n shows for number of columns. भाई पहला रोज को शो करता है, दूसरा कॉलम्स को शो करता है. It is called dimension of the matrix. In writing the order of the matrix, remember that first position is always fixed for number of rows and second position is always fixed for number of columns. That is, if order of the matrix is m cross n, m से मुराद है number of rows और n से मुराद है number of columns. The matrix has order 1 by 1. Has order 1 by 1. This matrix has order 3 by 2, or this matrix has order 3 by 3. Equal matrices. By two matrices A and B are said to be equal if A and B have same order. भाई A और B क्या है? Same order. Corresponding elements of A and B are same. भाई corresponding elements of A और B क्या होंगी? भाई दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए और उनका रिस्पेक्टिव एलिमेंट भी सेम होना चाहिए. इफ ए हमारे पास ए आई जे और बी हमारे पास बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन, ये भी एम क्रॉस एन, भाई देन अगर एम क्रॉस एन और एम क्रॉस एन इसके दोनों का ऑर्डर बराबर है और ए आई जे बराबर है बी आई जे, एलिमेंट मस्ट बी सेम, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी. भाई हम कहेंगे ए किसके बराबर है जी? बी के बराबर जी. फॉर एग्जाम्पल ए हमारे पास है 1 2 3 4, बी हमारे पास 1 2 3 4, इसका भी ऑर्डर 2 by 2, इसका भी ऑर्डर 2 by 2. भाई 1 जो है ना वो 1 के बराबर है
2 2 के बराबर, 3 3 के बराबर और 4 4 के बराबर. जब corresponding elements भी same, order भी same, then we can say that A is equal to B. Operations on matrices. We have already well known with the operations of addition, subtraction, multiplication, etc. performed on numbers. In a similar way, operations of addition, subtraction, multiplication can also be performed on the matrices. जी सूरह फातर पारा नंबर 22 आयत नंबर 22. पहले खुलासा. इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब होते हुए फरमाया. इस आयत मुबारक में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातब होते हुए फरमाया कि जिंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते, कि जिंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते. और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है, और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है. और जो लोग कब्रों में मदफून हैं उनको तुम कोई बात नहीं सुना सकते, और जो लोग कब्रों में मदफून हैं उनको तुम कोई बात नहीं सुना सकते. जी जिंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते, और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है, और जो लोग कब्रों में मदफून हैं उनको तुम कोई बात नहीं सुना सकते. जी अब इसका तर्जमा देखिएगा जी भाई वमा यस्तवी से लेके मनफिल कबूर तक. आयत नंबर 22 तर्जमा है और ना बराबर हो सकते हैं जिंदा और ना मुर्दे, और ना बराबर हो सकते हैं जिंदा और ना मुर्दे. बिला शुबा अल्लाह सुनवाता है जिसे चाहे, और ना तुम ए नबी सुना सकते हो इनको जो कब्रों में मदफून है. अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली और ईमान वाली ज़िंदगी अता फरमाए. इसका खुलासा फिर एक दफ़ा फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने मुखातब करते हुए फरमाया कि ज़िंदा और मुर्दा इंसान बराबर नहीं हो सकते, और अल्लाह तो जिसको चाहता है बात सुना देता है, और जो लोग कब्रों में मदफून हैं उनको तुम कोई बात नहीं सुना सकते. अल्लाह ताला हम सबको हदायत वाली, ईमान वाली और तंदुरुस्ती और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए.